Okay, once again, good morning to all of you. So, in the yesterday's class, we were talking about, we looked into the torsion of electrical cross section. Yeah, mute, please mute the mic whose mic is open. It seems there is echo. So, last class, we looked into the torsion of elliptical cross section. Let me know when my screen is visible to you guys. Yeah, anyone, please let me know. Yes, sir, it's visible. Yes, sir, Okay. visible. Okay. Uh, has the whiteboard come for you guys? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So we did talk about the elliptical cross section in the last class, and उसके लिए हमने stresses वगैरह की बात की थी. Then we started with the membrane analogy, and as we are discussing that it is given by a Prandtl, and it gives the analogy with the problem of torsion. So we were discussing this. So इसमें जैसे कि बात कर रहे थे कि we consider a membrane subjected to the pressure P, subjected to pressure P, and at the same time there is a applied N force on this S on this membrane, force per unit length. Then we look into the differential element. एक इसमें से एक element लेते हैं तो uh, how this element look like. So we have a dx and a dy. Then there is a force ndx on this elemental length dx and ndy on dy, and there would be a pressure p that would be acting in the z direction. उसी को फिर हमने यहाँ पे देखा था this diagram to make it more clear that how when we are looking from y, how this will look like, right? So there would be n dy on both the ends. There would be z at one end and z plus del z by del x into dx. So हमने ये यहाँ तक बात की थी. I hope this was clear to us, right? Yes, sir. Okay. So similarly, there would be, as I was saying, the same phenomena will be observed when you look from this blue arrow, this arrow, and you will find there will be ndx, and again there will be del z by del y, and same stuff. So now if I take the equilibrium of this differential element in z direction, so there would be the forces that would come out to be is there would be ndy into the component of it along the z direction. So here it is del z by
del x plus, ठीक है. I'm looking into the component of this in the z direction, right? Clear है ये? For sin component रहेगा, but because angle is small, sin of theta is theta हम जैसे लेते हैं, तो I have taken it like this, right? And then you have the component of this, that would be similarly x के when I'm looking from x, so I would have ndx into plus the force due to this uniform pressure, that is P dx dy should be equal to 0. Uh, is this equation clear? सर एक बार दोबारा बता दो. Okay. See, अब आपने पहले हम ये वाला डायग्राम तो अपने को क्लियर है, दिस एक्स वाई पे जो एक्स जेड पे जो मैंने बनाया है. यस सर. ओके, सो इस पे अगर आप फोर्सेस देख रहे हैं, तो जेड डायरेक्शन में जब आप फोर्स देख रहे हैं, क्या क्या लग रहा है? इस एन डी वाई का साइन कंपोनेंट लगेगा, and the sine component would be n dy into sine of this slope, right? And this slope is nothing but del z by del x plus del square. This is the slope, this one, right? I've encircled it so you can see it. Now, as the angle is small, I can directly take it sine theta is theta, so I've written this. ठीक है, ये क्लियर है? यस सर. सिमिलरली ये इस तरफ जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये एन डी वाई है, दिस वन आई हैव हाईलाइटेड इट, अंडरलाइंड इट. सो इस एन डी वन का भी साइन कंपोनेंट आप लेंगे, और वो डाउनवर्ड है, सो दिस इज देयर, राइट? क्लियर? यस सर. अब सेम फिनोमिना when I'm looking from here, from this blue arrow, you'll observe they'll be acting ndx, or there'll be, or let me do it this way. Right. So what would happen? There would be force here ndx, and there would be force here ndx, and we have this as z. This is, what would this would be? Z plus del z by del y into dy, where this is your dy, right? Are the thing clear now? मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं. Yes, sir. So you will have slope here as and here, right? So the slope
here would be del z by, or let me write it with this color, del z by del y, and here the slope would be ठीक है. So this is what it is. I hope the thing is clear now. तो ये सारे फोर्सेस ले रहे हैं और p dx dy that would be dx dy would be the area of this differential element and there's a uniform pressure. Is the equation clear now to us? Yes, sir. Okay. So I have written all the forces that are acting. So when you uh, do the basically ये term n dy del z by del x और minus n dy del z by del x चला जाएगा. And similarly, so what we are left out with is finally when we solve this equation, तो हमारे पास रहेगा कुछ इस प्रकार से आएगा. ठीक है. dx dy p के साथ dx dy है और यहाँ भी dx dy रहेगा, बाकी सारे टर्म चले जाएंगे. सो फाइनली वी विल गेट दिस इक्वेशन. Yes, sir. राइट. बाकी सब सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो the only we are left with this equation now. We further know that on the s, that is uh, let me go to s which is on the xy plane. ठीक है, जो इसकी बाउंड्री है xy प्लेन पे, वहां पे z की वैल्यू क्या है? Zero. Yes. So s on xy plane is, sorry, z, rather I would say z on xy plane is 0. Right. So this, if you see, this becomes analogous to the case of our stress function where z is your analogous to phi. So if you remember that, what we say is, what is the equation for torsion is del square phi by del x square plus del square phi, sorry, del square phi by del y square is equal to minus 2g theta. And if you see this equation, if you compare those equations, you will say phi z is analogous to phi, as phi को हम कहते हैं phi is constant on the boundary और outer boundary पे हम 0 भी लेते हैं. Yes, sir. Similarly, z on xy plane is 0. Right, that is on s. Let me write it. So z is analogous to phi, and if you compare this equation with this equation, you will see both are analogous, where minus, sorry, p by n is analogous to your 2g theta. ठीक है. तो z क्या है? हम z is basically the deflection in the this is similar to the membrane deflection in the upward direction, z direction,
and that becomes analogous to your stress function phi. And now if I talk about what is the volume that will be enclosed by this membrane, so that would be volume would be this would be the volume of enclosed by the membrane, right? Now again this become analogous to your, if you see what is the torque in case of torsion, टॉर्क कितना होता है टॉर्शन में, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस फंक्शन मुझे बताएंगे. We say that Double T is 2 into double Two double integration of into double phi integration phi five x dy. dx dy. dy, right? So as I'm saying phi is analogous to z, so I would say torque is volume, two times the volume enclosed by this deflected membrane, yes sir right? So this ये आपका यहाँ पे जो हम एनालॉजी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि phi is your analogous to z, and sorry, t is two times of the volume um, enclosed by this deflected membrane, and your p by n becomes similar to 2g theta. So if I summarize this analogy, so I can say phi is same as z, your p by n is same as 2g theta, and t is 2v. So कुछ टॉर्शन के प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हम मेम्ब्रेन एनालॉजी से सॉल्व करके फाइनली वी कैन फाइंड द टॉर्क बाय knowing the volume enclosed by this diffracted membrane, और एक बार टॉर्क मिल गया तो हम फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट भी निकाल सकते हैं. And now moving ahead further, now tau xz shear stress in terms of phi कैसे लिखते हैं, that is del phi by del y. double del y So similarly this would become, in case of membrane I can do it like this, del z by del y, and your tau by z is minus del minus phi by 25 del, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मेम्ब्रेन एनालॉजी की. आई होप द concept of membrane analogy is clear to all of you. yes sir ठीक है. Now if I talk about the contour having z equal to constant, यानी उस मेम्ब्रेन में कोई ऐसा कॉन्टूर लेते हैं जहां पे z की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वहां पे क्या होगा, फाई भी कांस्टेंट आएगा. ठीक है, एनालॉजी से हमारा फाई भी कांस्टेंट आएगा. अब डेल z बाय डेल s की बात अगर मैं कहूं तो कैन आई राइट डेल z बाय डेल s एज del phi by del s, which is I can write
del phi by del s into, sorry, यहाँ पे dx, I can write it like this, and del phi by, now del phi by del x क्या है in terms of stress? माइनस टू वाई जेड। ओके, माइनस टाउ वाई जेड है ना। और Sir, Z is equal to C. हाँ, ये कांस्टेंट है। हम ये बोल रहे हैं किसी कॉन्टूर में z इक्वल टू कांस्टेंट, c इज मींस कांस्टेंट, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन पे आप देखेंगे, लेट मी गो टू द डायग्राम। तो यहाँ पे कुछ, इसमें कहीं पे अगर मैं यहाँ पे एक, लेट से ऐसा काउंटूर लेता हूँ, ठीक है, तो इस पे सबकी सब पे z की वैल्यू कांस्टेंट है, अलग अलग जगह पे, मतलब ये काउंटूर होगा। आर यू गेटिंग मैं, विजुअलाइज हो रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, ये नीचे वाले Yes, sir. एक्स वाई प्लेन पे तो z इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे आपके, अब ये जो रिंग बनाई है मैंने, रिंग जैसी बन रही है, इस पे हम, रिंग जो है वो ऐसा है कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ पे z इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। Yes, और sir. सेम फिलोसफी यहाँ पे चल रही है कि z इक्वल टू कांस्टेंट है, तो वहां पे आपका, क्योंकि हमने कहा z इज एनालॉगस टू फाई, सो यू विल हैव फाई इज आल्सो एज कांस्टेंट। सो जस्ट आई एम राइटिंग दिस डिफरेंस। नाउ del phi by del x, जैसे कि हमने कहा, यू अभी somebody just said that it is minus tau of Oh, by Y z, Z. और dx by ds क्या होता है? दिस इज अगेन माइनस एन वाई, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आपको ध्यान होगा शुरू की क्लास में, मतलब टॉर्शन जब हमने शुरू किया था, Yes, sir. Minus NY. और ये डेल फाई बाय डेल वाई हो जाएगा मेरा टाउ एक्जेट, और डेल, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एन एक्स। सो दिस वुड टर्न आउट टू बी tau yz into ny plus tau xz into nx। तो क्योंकि z कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। डेल z बाय 0। सो दिस शुड बी 0, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान दें, ये दोनों, तो ये क्या है? टाउ yz into ny plus tau xz into nx, ये क्या है? Traction in Z direction. हम्म, Sir, traction ट्रैक्शन इन z डायरेक्शन, राइट, Z direction. है ना? हाँ, ट्रैक्शन इन z डायरेक्शन मतलब, Z direction. मतलब कि दिस इज योर टी, जिसको हम कहते हैं, दिस इज व्हाट इट इज, राइट। सो द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ ट्रैक्शन जीरो है, मतलब ये जीरो है, दैट मीन्स द स्ट्रेस इन z डायरेक्शन वुड बी जीरो। क्लियर हुआ क्या कहने की कोशिश की मैंने? ये आपका ट्रैक्शन इन z डायरेक्शन देता है, राइट। सर ये जीरो कैसे है? ये देखो हमने क्या कहा, हम क्या ले रहे हैं, किसी, हमने वो काउंटूर लिया जिसपे z कांस्टेंट है, मतलब फाई भी कांस्टेंट है। अब z कांस्टेंट है तो डेल z बाय डेल x तो जीरो ही ना होगा। ओके ये सर. जीरो होगा कि नहीं होगा डेल, तो इसको ओके हम सर. बोल रहे हैं कि ये जीरो है, इसलिए ये भी जीरो होगा, ठीक है। ओके, सो आई होप the membrane analogy is clear to us now.
we'll move to the, सर हाँ सर बोलिए, क्वेश्चन हाँ बोलिए। सर यदि पी एक्ट कर रहा है जेड की डायरेक्शन में तो फिर ट्रैक्शन जीरो क्यों होगा? नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, आप पी मेम्ब्रेन में देख रहे हो, और मैं अभी किसका बता रहा हूं, ये जो हमने निकाला, ये मेम्ब्रेन से मैं कंपेयर किस पे कर रहा हूं, आप टॉर्शन, आप शाफ्ट की बात कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो शाफ्ट के एनालिसिस को मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये जो है जेड, ये हम मेम्ब्रेन के लिए देख रहे हैं, ये फाई हम किसके लिए देख रहे हैं, शाफ्ट के लिए, ठीक है। अब ये शाफ्ट पे क्या लगा है, टॉर्क, ये आपका जेड डायरेक्शन है। सो डोंट गेट मिक्स अप, दोनों में जेड अलग अलग चीज है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहने की कोशिश की? नहीं सर, एक बार और बता एक बार दीजिए। दोबारा बता दो सर। Yes, sir. But sir, देखो, in case of membrane direction, देखिए मेम्ब्रेन में जो जेड है वो, ये आपका ऐसा केस है, ठीक है, दिस इज योर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन का जेड जो है वो डिफ्लेक्शन बता रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। जेड डायरेक्शन में हम डिफ्लेक्शन की बात कर, राइट। This is when we are, and we are comparing this analogy with the torsion of the shaft. So अब इसमें जब मैं कह रहा हूं ये जब मैं कह रहा हूं, ये मैं किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये शाफ्ट के लिए, ये जो z है ये शाफ्ट का z है इस डायरेक्शन पे, और ये जो z है ये, इसमें मैं बोल रहा हूं कि यहां पे अगर मैं देखता हूं, एक मैंने ये कहा कि इसका जो z है, यहाँ पे एक रिंग लिया, वहां पे क्या होगा, z की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं किसके कंपैरेटिव है, किसके कंपैरेटिव है, जो इस शाफ्ट में फाई होगा, जो इस शाफ्ट में स्ट्रेस फंक्शन होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, या कैन यू कम, जिसको डाउट था, यहां पे जो z है वो यहां पे यस सर। फाई के रिलेशन में, लेकिन यहां जो मैं z लिख रहा हूं टाउ है z, ये डायरेक्शन है, ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। डोंट गेट कि ये z और yes ये sir, z, clear. ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द another topic, that is torsion of bar with thin rectangular section. So एक बार है जिसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लेंथ नहीं है, याद रखिएगा। सो it is very thin, having thickness t, and let's say this is b, and it is subjected to torque. This is the cross section of the bar, so it is subjected to a torque, and t is less than b, it is the बाउंड्री जो है इसकी एक ही लाइन सेगमेंट है, मतलब
कनेक्टेड है तो हम इसको सिंगल बाउंड्री सेक्शन कह रहे हैं. And again, on the boundary, we are assuming that phi is 0 as we have been assuming on the outer boundary that phi is 0. हमारा जैसा कि हम जानते हैं this is del square phi by this is valid for the problem of torsion. Now as we have a small thickness cross section, so let me write the name itself. तो अगर AD और BC जो लाइन सेगमेंट है इनको छोड़ दिया जाए, AD और BC को छोड़ा जाए, तो जो स्ट्रेस फंक्शन है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म रहेगा. ठीक है, क्योंकि यू हैव the as I said B is very big as compared to T, so phi is uniform and is independent of x. कहने का मतलब C से D पे when we are moving from C to D there won't be much effect on phi. There won't be a variation of phi with x. Right, so I can write this equation as we are saying phi is independent of x. तो अब इसको आप now it becomes a differential equation of single variable, right? So can we integrate it, and in terms with respect to y twice इसको हम दो बार इंटीग्रेट कर सकते हैं. So what would be the phi? दो बार इंटीग्रेट करेंगे. सर ए बी और डी सी पर तो फाई 0 होगा ना. हाँ, एडी और बीसी वैसे तो आउटर बाउंड्री पे 0 ही होगा. मेरा ये कहना है कि वेरिएशन जो होगा जब आप यहां से देखेंगे तो ऊपर और नीचे की तरफ की वेरिएशन की बात हो रही है. ठीक है, और वैसे ही इस अलोंग दी एक्स एक्सिस वेरिएशन की बात हो रही है. आउटर बाउंड्री पे तो 0 होना ही है. ए बी ए डी डी सी बी सी सब पे 0 होगा. वो तो हम अभी आप लिमिट्स भी रखेंगे तो वो देखेंगे ही हम. ठीक है, हमारा ये कहना है कि अगर आप अंदर अंदर भी देखते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि काउंटूर्स बनते हैं फाई के, जैसे हमने पहले भी बनाए. हमने इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन अगर आपको ध्यान होगा तो हमने काउंटूर्स बनाए थे. ठीक है, फाई के कुछ ऐसे काउंटूर्स बनाए, कहा था ये फाई की एक वैल्यू, ये फाई की दूसरी वैल्यू. ठीक है, ऐसे याद है ये फाई यस की. सर, वो कांस्टेंट्स थे तो मैं हाँ, तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि अब इनके अलोंग तो फाई वेरी हो रहा है ना व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम रेड टू ब्लू. यस सर. तो वैसे वैसे ही हम कह रहे हैं कि भाई हमें कह रहे हैं कि एडी और बीसी पे अगर छोड़ दें तो फाई जो है वो मोर और लेस एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स से इंडिपेंडेंट हो जा रहा है.
इस केस के लिए। Sir, हाँ बोलो। sir, if t is very less, then it should be independent of y. नहीं मतलब y के इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, क्योंकि यदि t वेरी लेस है नहीं x के साथ तो वेरी करेगा. नहीं, टी के साथ वेरी होगा फाई की वैल्यू। ठीक है, आप कहने का मतलब ये है कि अगेन लेट मी डू इट दिस वे। ठीक है, अगर ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है, ग्रीन वाली लाइन, ये क्या है, फाइव एक वैल्यू है। ठीक है, यस सर. अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, स्ट्रेट करते जाऊं, तो क्या होगा, इस ग्रीन वाली लाइन को आई एम क्रिएटिंग लाइक दिस नाउ। ये पूरी ग्रीन वाली लाइन पे फाइव कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके इंडिपेंडेंट है, यस सर. एक्स के इंडिपेंडेंट हो गया ना भाई, यहां से यहां तक आपका सेम फाइव है, यहां से यहां तक यस आपका। सर. तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि y के साथ तो वेरिएशन होगा, बट x क्योंकि आप उसका डायमेंशन बढ़ाते जा रहे हो, तो वो मोर और लेस एक स्ट्रेट लाइन के जैसे होना चालू हो जाएगा। y के साथ तो वेरिएशन आएगा यहाँ पे, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे और इस ग्रीन पे, इसके अलोंग तो वेरिएशन आएगा, राइट, बट व्हेन आई से you look into from here to here, there won't be much variation. यस सर. ठीक है, क्लियर हुआ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा। यस सर, क्लियर. ओके, सो हाँ, तो अब फाइव को इंटीग्रेट करें इस विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्वाइस। जी थीटा क्यूब। क्यूब, थीटा क्यूब को हो गया, थीटा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, इज इट? ओ सो इट वुड बी जी थीटा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वन वाई थीटा वाई प्लस सी वन वाई प्लस सी टू। ठीक है, अब जो लिमिट्स अभी किसी ने कही थी थोड़ी देर पहले कि भाई वी नो दैट एट y equal to plus minus t by 2, phi would be 0 on the top and the bottom a b और c d पे। यस सर। तो इसको रखिए और c1 और c2 की वैल्यू निकाल के बताइए। हम्म, सी वन तो जीरो आ जाएगा सर। ओके वेट, c1 is 0 जीरो and c2 would be So C2 is 0. सर सर ये सर ये टी बाई टू पे फाइव की वैल्यू जीरो एक बार फिर से बता दीजिए. फाइव, आपने देखो फाइव मैंने आउटर बाउंड्री है ना, टी प्लस प्लस टी बाई टू और माइनस टी बाई टू पे आउटर बाउंड्री है, ए बी और सी डी पे हो आप, ए बी और सी डी पे हम क्या मानते हैं, फाइव इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ? So C1 equal to 0 and C2 equal to minus g theta जीरो equal जीरो to t square by 4. जी थीटा टी स्क्वायर बाय फोर जी थीटा T square by 4. टी स्क्वायर बाय फोर नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव Yes हाँ sir. सर Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव ओके, सो our phi would turn out to be, finally putting this, so g theta t square by 4 minus y square. So this would be my phi finally when I put the value of
C2 and C1 back into equation. So this would this would be how it is phi. And once phi is known, can we find tau xz as del phi by del y and tau yz as minus del phi by del x? What those would be? वाई जेड तो जीरो होगा, टाउ वाई जेड तो Tau yz 0 हो गया, फाइन. माइनस का टू जीटा वाई, Minus टू जी थीटा वाई. 2g theta y. Okay, so this is your tau xz. And so as tau yz is 0, अगेन यहाँ पे हमने ये याद रखना है आपको कि ये इक्वेशन जो है, ये जो आपकी आ रही है, ये बेस्ड ऑन द आपके, ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगे एडी और बीसी पे. ठीक है, जो लेफ्ट और राइट एंड्स हैं उन पे वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि आपने अजम्पशन में पहले ही माना है कि भाई एडी और बीसी को एक्सेप्ट करते हुए ये इक्वेशन 5 को हमने कंसिडर किया. ठीक है. नाउ व्हाट वुड बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? क्योंकि yz तो 0 है, तो मैक्सिमम टाउ एक्जेक्ट की ही वैल्यू आएगी. सो व्हाट वुड बी दैट? कब आएगा? जब हम b बाय t टी बाय बाई 2 टू पे हैं. एंड दैट वुड बी टाउ मैक्स वुड बी, जी थीटा हाँ, 2g theta into t टी by बाई 2, that would be plus minus g theta t. Now once, so this is would be the our tau max, and similarly we can find the torque. Again, stress function is known to us, so we can find the torque, and your x varies from minus b by 2 to b by 2. Sorry, minus b by 2 to b by 2, and your this varies from minus t by 2 to t by 2, and your phi is known as g theta t square by 4 minus y square dx dy. So when you double integrate, x का तो कोई फंक्शन है नहीं, so we can separate this. g theta भी कॉमन निकाल सकते हैं, so you will have okay, integrate this and tell me what would be the torque for this narrow rectangular section. Yeah, anybody please do जीरो, the जीरो सर. zero. नहीं, zero नो नहीं सर, है. जीरो नो. जी थीटा बी E टी क्यू theta बाई t cube b by 3. 3. 1 by 3 जी g थीटा b T cube cube b. बी टी क्यू, बी टी क्यू. okay, b t cube. Okay,
So you have B T cube. So this is what the uh, torque for the narrow or the thin rectangular section is. और यहाँ से आप फिर थीटा को इन टर्म्स ऑफ टॉर्क निकाल सकते हैं. सो दैट विल बी 3t by g b t cube, and which you can use in tau. टाउ के लिए जो एक्सप्रेशन बना था हमारा टाउ मैक्स के लिए और टाउ एग्जेट के लिए. टाउ एग्जेट के लिए अगर आप देखते हैं तो दैट वाज माइनस 2g थीटा इंटू वाई. तो थीटा की जगह इसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. क्या 6t बाय bt क्यूब, bt क्यूब इंटू वाई. यस सर. एंड दे वुड बी minus. So this would be our tau exact, और फिर उसका टाउ मैक्स भी निकाल सकते हैं. Tau max equal to 3t upon bt square. कितना बताया, 3. T थ्री upon टी BT स्क्वायर. bt square. Fine. So this would be our tau max. Now this formulation what we have developed is used for the rolled profile sections. जो rolled sections होते हैं उनके torsion of rolled sections के लिए इनको ये expression को यूज किया जाता है. Rolled sections in the sense when you have channel, if you have a channel section, having thickness t, so directly इसमें हम ये मान सकते हैं कि this rolled section is nothing but a triangle, sorry not a triangle, a rectangle that is bent at an angle of 90 degree, and this hole would be considered as a B. So that's a rectangle. भी एक रेक्टेंगल है जिसको आपने 90 डिग्री पे यहाँ बेंड कर दिया है, तो वो चैनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. राइट. सो दिस व्हेन यू बेंड इट थ्रू 90 डिग्री इट बिकम्स अ चैनल सेक्शन, और ये जो टोटल सम है ये पूरा बी है. तो this the what we have developed formulation is used for, as I said, for torsion of rolled section. And again here you will be using that t is, or tau, whatever we have t is, or phi rather I would say. Your phi is, phi के लिए क्या एक्सप्रेशन डेवलप किया था हमने, g theta t square by 4 minus y square. Right. So we can apply this for this. Similarly, if you have the T section, T section. So in this case, what we do have this as B1, this as B2, and this T1, let's say T1 ही ले लेते हैं, T1, T2. तो इस केस में फिर हम सेम फॉर्मुलेशन को लगाते हैं, और what we do, we'll do a sum over, or torque would be the sum of 1 by 3 g theta b I t I cube. यही था, आई होप 1 by 3 g theta. हाँ, तो अब ये हो गया b1 t1 क्यूब. 1 by 3 g theta को आप कॉमन ही ले लीजिए, इधर you do it this way.
सो B1 T1 क्यूब B2 T2 क्यूब, ये हो गया आपके T सेक्शन के लिए. सिमिलरली इफ यू हैव एन I section you can do it for that also. They are nothing but the, so for I this also we can do B1 B2 B3, and you can apply this formula to know what would be the torque that can be applied. ठीक है, तो इस पे हम एक आध एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. we'll probably try to solve the simple problem of role profile sections, right, in the next class. So if there is any question we can take it, otherwise we can stop it here today. सर ये टॉ टॉ मैक्सिमम कैसे आया था सर, एक बार ये समझ में नहीं टाउ आया कौन सा टाउ मैक्स? तो कुछ नहीं, कहाँ पे आएगा मैक्सिमम? सर, जहां पे ऊपर आपका वाला। वाई, हाँ ये वाई मैक्सिमम होगा वहीं आपका टाउ मैक्स आएगा, राइट. तो वाई मैक्सिमम कहाँ था भाई? T/2. मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है वाई की? T/2. तो आपने T/2 रख दी. ओके फाइन. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो ये जो बताया मैंने, जो फॉर्मुलेशन हमने थिन रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए डेवलप किया, वो हम रोल प्रोफाइल सेक्शंस के लिए यूज करते हैं. अगेन दिस इज नॉट, एज आई एम सेइंग, कि ये एंड्स पे, इस एंड पे वैलिड, this won't be valid on the this zone, right. So you have to बाकी जगह ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता, बाकी जगह पे अप्रोक्सीमेशन ठीक है. Okay then, thank you all, we'll meet in the next class, right. Thank you. And Thank you. so, and probably today I'll be finalizing the group and topics. ओके सर, Okay, fine, thank you. थैंक यू सर.